Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems. Let us for now get at this question. देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं. So there are two rods basically of different metals having same area of cross section. So cross section area is same. Let us say this is A. This one is also A. At each point it is A. And then they are placed between two massive walls. Then so they are limited. I mean they are not allowed to go beyond this one. This is not allowed to go beyond this क्योंकि wall के बीच में रखा हुआ है. Done. Now the first rod has length L1, coefficient of linear expansion alpha 1, Young's modulus gamma 1. Similar things or values for second rod is also given L2, gamma 2, alpha 2, right? Now what we are doing, temperature of both the rod is now raised uniformly by T degree. So we are raising the temperature by T degree. Done है. What will be the effect of this rise in temperature? आप सोचो आपके पास जब फ्री रॉड होता है ना, जब आप इसको हीट करते हो, what will happen? It will expand, it will expand. So I mean it can expand क्योंकि ये दोनों end fix नहीं है, right? So there is freedom, it can go, it can react to heat गेटिंग रिसीव्ड राइट एंड रिएक्शन ये होगा कि ये एक्सपैंड करेगा बट यहाँ पे वो रिएक्शन नहीं दे सकता वो एक्सपेंशन के फॉर्म में वो रिएक्शन नहीं दे सकता राइट सो व्हाट इट विल डू आई मीन इट विल ट्राई टू एक्सपैंड सो इट इज I mean somehow it is putting some effort onto the wall. So wall will do what? It will also put the effort on this cross section and it will keep it limited, right? So it will stop that expansion from happening. Done है. और एक्सपेंशन को होने से रोकने के लिए यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है राइट सो यहाँ पे भी फोर्स एफ लग रहा है यहाँ पे भी फोर्स मैं लिखूंगी एफ क्यों क्योंकि देखो दिस कंपोजिट सिस्टम ऑफ रॉड इज एट रेस्ट इक्विलिब्रियम तो अगर इधर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एफ लगा है तो इधर भी एफ ही लगना चाहिए देन ओनली नेट फोर्स विल बी जीरो राइट देन ओनली नेट फोर्स विल बी जीरो सो यहाँ पे भी मैंने एफ बोला इसी तरह से अगर आप रॉड को कट भी कर देते हो ना तो कोई भी सेक्शन पे अगर आपको निकालना है फोर्स तो यहाँ पे भी एफ ही होगा from this same equilibrium reasoning, right? So this will be same. अब देखो because of this what will happen? It is trying to expand because of temperature change and because of this compressive stress क्या करेगा उस एक्सपेंशन को रिड्यूस करेगा यानी कि जितना एक्सपैंड करना चाहता है उतना ही उसको कॉम्प्रेशन भी मिलेगा तो इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा देयर वोंट बी एनी चेंज इन द लेंथ डन है सो व्हाट वी आर आस्क्ड फाइंड द फोर्स विथ व्हिच रॉड्स एक्ट ऑन ईच अदर in terms of given quantities. So what is the force getting acted by rods on each other? So at this point. So at this point, if you will take any rod, at this point force acting is F. So here force acting will be F only. So F we have to calculate basically. How we can go around it? सो सिंपल कॉन्सेप्ट तुम्हें ये दिख रहा होगा कि टेम्परेचर की वजह से जो चेंज इन लेंथ होगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एफ डन है we can equate these two we can get certain relation so let us do this delta lt आप क्या लिखोगे this will be I mean change in L1 length will be L1 alpha 1 delta t ठीक है and change in length L2 will be how much L2 alpha 2 delta t right दिस इज द फॉर्मूला है ना क्योंकि लेंथ को आप किसी भी टेम्परेचर पे लेंथ को क्या लिखते हो L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी राइट सो L माइनस L नॉट अगर आप करोगे तो यू विल बी लेफ्ट विथ L नॉट अल्फा डेल्टा टी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू original length into alpha into temperature change. So that is why I've written here. Then, so delta LT will be equal to how much? So L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 into temperature, right? Delta T is T here. Then, so this is this. Now let us calculate this length चेंज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस सो फर्स्ट के लिए अगर आप लिखो तो देखो यहाँ पे फोर्स एफ लगा यहाँ पे एफ लगा है एंड फोर्स पर यूनिट एरिया आप क्या लिखते हो गामा डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ राइट सो फर्स्ट सेगमेंट के लिए मैं लिखने जा रही हूँ फोर्स बाई एरिया इज इक्वल टू गामा 1 एंड लेट्स से दिस इज डेल्टा L1 डैश डिवाइडेड बाई L1 so what will be delta L1 dash delta L1 dash will be f L1 by a y1 and similarly, what will be your delta L2 dash? This will be F L2 by A Y2 because force यहाँ भी same ही लगेगा इस segment के लिए भी इधर F है इधर F है right? So it is the same one. So here it is this one. अब देखो यहाँ पे आप change in length देख लो total change in length because of compressive stress. So that is equal to F common ले लो आप F by A will be common and then you are left with what L1 by Y1 plus L2 by Y2 it is what we are getting then so this is what we are getting अब आप क्या कर सकते हो इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो
तो चलो इक्वेट करते हैं। सो आफ्टर इक्वेटिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग, सो F by A, this is L1 by Y1 plus L2 by Y2, and this is equal to how much? This is equal to L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 into how much? Temperature. This is what we will be getting. So from here we can write force, right? So let us do that. So F will be how much? This will be equal to, let us just put it AT L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 divided by how much? L1 by Y1 plus L2 by Y2. ठीक है? So this is the value we are getting for force. Done है? Now let us move to the second portion. Second portion में question में क्या पूछा जा रहा है? Also find the length of rods at higher temperature. So what will be the length of rod? कहने का मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग तुम्हें लग सकता है, बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस सेक्शन एट टेम्परेचर बाय आफ्टर टेम्परेचर हैज रीजन बाय T डिग्री, एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट आफ्टर टेम्परेचर हैज रीजन बाय T डिग्री. तो आप सोच रहे होगे कि मैम चेंज तो हुआ नहीं है तो सेम रहना चाहिए, बट ये थोड़ी क्लियर है कि जो तुम्हारा यहाँ पे इस सेगमेंट के लिए जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हुआ है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो डिक्रीज इन लेंथ होगा विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन लेंथ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज. वो एक सेगमेंट के लिए नहीं रिलेशन होल्ड हो रहा है, ओवरऑल होल्ड हो रहा है, राइट? सो डेल्टा टी ओवरऑल इज इक्वल टू डेल्टा एल डैश ओवरऑल, right? So delta L dash overall. So overall this is this thing, right? So अगर आप each segment की बात करोगे तो change in length आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बताओ? So initial length is how much? L1, and because of temperature, how much it will change? So this is L1 alpha 1 T. Done it? So let me write it more clearly. Okay. So yeah. So let us say, initially its length is how much? L1. Done it? And change in length because of temperature. So delta L1T. Because of temperature, it is equal to how much? L1 alpha T, alpha 1 T, right? And change of length in 1 because of this force F thing will be how much? That will be, F by A was equal to how much? This is gamma delta L by area. No, sorry, original length, right? So delta L1 का formula क्या होगा? This will be F L1 here divided by A Y1. It is this one, right? So change in length, change in length will be given by this two, right? Subtraction of these two. क्योंकि देखो, one is trying to expand it, another is trying to compress it. So change in length we will be writing as how much? L1 alpha 1 T minus F L1 by A Y1. Done it? So this is the change in length. So what will be the final length? That you will be writing as L1 plus L1 alpha 1 T minus F L1 by A Y1. आप F का वैल्यू पुट करना, यू विल बी गेटिंग द आंसर. सिमिलरली फॉर सेकेंड सेगमेंट अगर आप करते हो तो सेकेंड सेगमेंट का लेंथ क्या है? L2. बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज व्हाट विल बी द वैल्यू? Because of temperature change, what will be the change in length? That is L2 alpha 2T. And because of this compressive stress thing, what will be the decrement in length? So because of force F, it will be FL2 by AY2. Done है? So total change in length आपको पता है कितना हो रहा है? This minus this. So new length L2 dash will be equal to L2 plus L2 alpha 2T minus FL2 by AY2. Done है? So this will be the thing. अब आप देखो L1 dash, this is L1 dash and this is L2 dash. अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज जाओ तो आप ये बोलोगे कि L1 dash plus L2 dash will be equal to basically L1 plus L2. So this will be equal to how much? आप देखो यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो. So L1 plus L1 alpha 1 T1, sorry T plus L2 alpha 2 T. Done है? And minus how much? F, this is F, okay, F L1 by A Y1 minus F L2 by A Y2. ऐसे भी हमने इसको इन दोनों के समेशन के इक्वल ही किया है. So basically this will get cut and we will be left with how much? We will be left with L1 plus L2. Done? So overall कहने का मतलब ये है कि overall length में कोई change नहीं हो रहा, but segments में change हो सकता है. Done है? Done है? क्योंकि सेगमेंट के पास वॉल नहीं है, यहाँ पे वॉल नहीं है. डन है? हियर इट कैन एक्सपैंड.
So overall, I mean, we have to make sure that length is not changing. For segments it can change such that overall change will stay constant. Done it? So I hope you have got this question, and I hope you got every concept that was involved in here. But if you have any doubt anywhere, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.